Hello everyone, my name is Sumedha. In the previous lecture, we have studied the concept of center of mass. Now in this lecture, we'll study the motion of center of mass. So now, from the definition of center of mass, says m into r is equals to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus up to so on mn rn, where capital M is the mass or center of mass and r is the distance from the origin or any reference point we have taken, distance of center of mass. So this product of center of mass and distance of center of mass is equals to mass of first particle into distance of first particle plus mass of second particle into distance of second particle and up to so on nth particle. So let us say this is equation number 1. We'll differentiate equation 1 with respect to time. So we'll get d by dt of mr is equals to d by dt of m1 r1 plus m2 r2 plus mn rn. So from here we'll get m d by dt of r is equals to m1 d by dt of r1 plus m2 d by dt of r2 plus mn d by dt of rn. Here we have taken mass as a constant quantity. Mass is constant, इसलिए हमने मास को बाहर रख लिया. Now dr upon dt, rate of change of distance is velocity. तो mass into velocity is equals to m1 v1 plus m2 v2 plus mn vn, where v1 is equals to dr1 upon dt. This is velocity of particle 1. Similarly, v2 is equals to dr2 upon dt. This is velocity of particle 2, and capital V is equals to dr upon dt. This is velocity of center of mass. So on differentiating this equation, we get this equation. Say this is equation 2. अब ये इक्वेशन क्या बताती है? जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है. अब जो मेरी बॉडी है, जो मैंने कंसीडर करी है, हम कोई भी बॉडी कंसीडर कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है और मैंने उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया. तो विद कैपिटल V सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, विद V1 पार्टिकल 1, with v2 particle 2, with v3 particle 3 and nth particle की velocity vn है. That means center of mass के साथ साथ हर rigid body का जो अपना individual particle है वो अपनी velocity के साथ move कर रहा है. Now from equation 2 we'll again differentiate with respect to time. So d by dt of mv is equals to d by dt of m1 v1
plus m2 v2 up to mn vn. On differentiating, we'll get m constant d by dt of v, m1 d by dt of v1 plus m2 d by dt of v2 plus mn d by dt of vn. So rate of change of velocity will give me acceleration. So m into a, m1 into a1 plus m2 into a2 plus up to so on mn into an, where capital A is equals to dv upon dt, which is acceleration of center of mass. Similarly, a1 is equals to d1 upon dt, which is acceleration of first particle, and a2 is equals to dv2 upon dt, which is acceleration of second particle. So on differentiating equation 2, we get the acceleration of particle and center of mass. Now, consider this as equation 3. Now we'll relate equation 3 with the forces acting on the different particles and center of mass. So now, from equation 3, we know force is equals to ma. Using this law, we'll say ma is equals to m1 into a1, I can say force F1 plus m2 into a2 F2 up to so on Fn. अब जो ये force F1 है, this is total force acting on first particle. That means जो मेरा rigid body में particle 1 है, F1 total force represent कर रहा है जो first particle पे act कर रही है, तो वो force external भी होगी और internal भी होगी. That means externally भी कोई force exert हो रही है अगर body पे, तो वो particle 1 पर भी exert होगी. तो ये तो ही external force की बात. अब जो internally और particles है, वो particle 1 पे कुछ force exert करेंगे, तो वो होगी internal force. Now, similarly, जो F2 है, वो भी sum है उन सब forces का जो particle 2 पे act कर रही है. अब बात करते हैं internal forces की. Internal forces acting on different particles is 0 because Newton's third law of motion follows. अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो जितनी भी मेरी इंटरनल फोर्सेस है, से पार्टिकल 1 की इंटरनल फोर्स है, उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, उसके ऑपोजिट में विद सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन किसी और पार्टिकल की फोर्स होगी दैट विल कैंसल आउट ईच अदर. दैट मीन्स जो इंटरनल फोर्सेस होंगे बिटवीन द पार्टिकल्स दैट विल बी 0. तो अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस. तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है? वील से ma इज इक्वल्स टू f एक्सटर्नल. वी गेट दिस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है?
हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी ऑन अ रिजिड बॉडी. सो दिस इक्वेशन सेज जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो कैपिटल M है, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास, वो मास है जहाँ पे पूरी बॉडी का जो मास है वो कंसंट्रेटेड है. सो कैपिटल M इज द कंसंट्रेटेड मास ऑफ द होल बॉडी. और जो एक्सेलरेशन है वो इस कैपिटल M की है, विच इज सेंटर ऑफ मास. So this is the force relation with acceleration for a center of mass body. Now we have said that the internal forces contribute 0 to center of mass motion. So we'll see through an example. हमने एक projectile ले लिया. This is x-axis, this is y-axis. So this projectile is moving, and at any instant, say time t, this projectile explodes. At time t it explodes due to internal forces. जब ये प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड होगा तो जो इसके कंपोनेंट्स है वो स्कैटर हो जाएंगे. से दिस इज 1, दिस इज 2 इन डिफरेंट डायरेक्शंस. लेकिन जो सेंटर ऑफ मास होगा projectile का, that will move under the influence of external force and continues its parabolic path. That means center of mass moves under the influence of external force only and continues its parabolic path. So this is a live example which shows the internal forces contribute 0 to the motion of center of mass of a particle. So now we'll study linear momentum of a system of particles. Earlier we have studied linear momentum for a single particle or a single object. अब हमारे पास system है which is consist of n particles, m1, m2 and up to n particles. So now from the definition of linear momentum, we know momentum is equals to mass into velocity. We are talking about a system of particles. Therefore, the total momentum of the system is given by momentum of first particle plus momentum of second particle, momentum of third particle up to so on nth particle. That means the total momentum is the sum of all the momentums of the particle. So now, substituting the value of P, we'll get mv is equals to m1 v1 plus m2 v2 plus up to so on mn vn, where this is for first particle, for second particle, and this is for nth particle, and this is for center of mass. Now differentiating center of mass, we'll get m dv upon dt, which is equals to acceleration. So m a, which is equals to F external, that means the external force applied. So from here we get dp upon dt is equals to F external. तो जो पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा पूरे सिस्टम का और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, वो क्या होगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स जो एक्सटर्नली अप्लाई हो रही है उसकी वजह से होगा. से इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रही है, जितनी भी फोर्सेस है ऑल आर इंटरनल फोर्सेस. तो अगर एफ एक्सटर्नल 0 हो गया
So we'll get dp upon dt is 0 and p is equals to constant. In this case, my momentum is conserved. So this also proves the law of conservation of momentum when external force is 0. So this was the momentum for system of particles. Now we'll discuss about angular velocity. We have already studied about angular velocity. Again we'll see from this diagram, this is my fixed axis which is called axis of rotation. So at time t, my particle is at point P and after some time, the particle is at P dash. So there is a change in angle delta theta, where delta theta is angular displacement. And delta t is the टाइम इंटरवल, उतना टाइम इंटरवल जितना कि पार्टिकल को पोजीशन P से P डैश में जाने में लगा. सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा, दैट विल बी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t. If we approach limit delta t to 0, we'll get omega is equals to d theta upon dt. So this is angular velocity. We know the relation between angular velocity and linear velocity, which is equals to v r omega. अब ये रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं और डिराइव भी कर चुके हैं. नाउ इन दिस आर्टिकल व्हाट वी डू, वील टेक अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड ओमेगा. यहाँ डायग्राम से देखेंगे. अगेन एक्सिस इज फिक्स्ड, पार्टिकल इज एट पॉइंट P, दिस इज द सेंटर, डिस्टेंस इज r, दिस इज द origin of the axis, and this is r distance from origin of the particle. Origin of particle के बीच का distance r, and in this direction my angular velocity is taking place. अब इसकी डायरेक्शन कैसे जज हुई, जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है मेरी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन. सो वील टेक क्रॉस प्रोडक्ट, v इज इक्वल्स टू r क्रॉस ओमेगा और v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r. v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस, अब r क्या है, OP, so we'll substitute OP. तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस. अब OP को हम क्या लिख सकते हैं, OP की डायरेक्शन ये है, CP की डायरेक्शन ये है. तो फ्रॉम ट्रायंगल लो I can write OP as sum of CP plus OC, where C is this center. So we'll write OP as OC plus CP. So velocity is equals to omega cross OC plus omega cross CP. So now from the diagram we'll see omega cross OC is 0 because omega is along OC. So this cross product goes 0 and V is omega cross CP. CP की वैल्यू है R perpendicular because CP is perpendicular to omega. Therefore, we'll get V is equals to omega cross R perpendicular, or we can write V is equals to omega cross R. So this is a relation for pure rotation of a body.
अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एंगुलर एक्सेलरेशन is denoted by alpha, that will be equal to rate of change of angular velocity d omega upon dt. This is angular acceleration. This is a vector equation. Now, as we are talking about pure rotation or we are talking about axis of rotation which is fixed, अगर हमारी axis of rotation fixed होती है तो जो मेरी ओमेगा की डायरेक्शन है that depends on alpha. That means alpha की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी ओमेगा की डायरेक्शन पे. So this was all about angular velocity and angular acceleration. We'll see you in the next video.